अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, HTML5 and CSS 3 सीरीज़ में आपका वेलकम करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप एक HTML फाइल को एक CSS फाइल के साथ लिंक करते हैं। तो जैसा कि आपको सबसे पहले HTML फाइल का जो टेक्स्ट होता है उसकी फॉर्मेट के लिए उसकी जो एडिटिंग होती है या उसका जो स्टाइल होता है उसके लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में CSS को HTML फाइल के साथ लिंक करने के बेसिकली 3 मेथड्स को हम सीखेंगे। सबसे पहले जो मेथड इस्तेमाल होता है वो होता है इनलाइन स्टाइल शीट। इनलाइन स्टाइल शीट में ये होता है कि आपने टैग के अंदर ही आपने जो होता है वो स्टाइल प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद दूसरा मेथड आता है इंटरनल स्टाइल शीट का। इंटरनल स्टाइल शीट में ये होता है कि आपने जो हेड टैग यूज़ किया है उसके अंदर ही आपने स्टाइल प्रोवाइड करना होता है। और तीसरा मेथड है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में आप अपनी जो एक नई फाइल बनाते हैं फिर उस फाइल का लिंक आपने हेड टैग के अंदर प्रोवाइड करना होता है। इसके बाद चलते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ लिंकिंग CSS टू HTML फाइल। तो जब आप लिंक कर रहे होते हैं CSS फाइल को तो उसके लिए फिर आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं स्टाइल के। जब आप इनलाइन मेथड को देखते हैं तो इनलाइन में आप टैग का नेम लिखते हैं, जिस टैग को आपने स्टाइल देना है या जिस एलिमेंट को आपने स्टाइल देना है उसके टैग के अंदर ही जो उसका ओपन टैग होता है उसके अंदर ही आपने स्टाइल लिख के इक्वल का साइन डालना है, डबल कोटेशन देनी है और आपने जो प्रॉपर्टीज़ है उसको आपने लिखना है। वो आपके अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप उसका बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, उसका जो फॉन्ट साइज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरे मेथड में जो इसका एट्रीब्यूट है वो है स्टाइल ओपन टैग एंड देन क्लोज टैग। इसके अंदर आपने आके इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको प्रोवाइड करना है। एंड थर्ड मेथड इज़ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में आपने एक सेपरेट फाइल ओपन करनी है, उसमें आपने प्रॉपर्टीज़ को देना है, फिर उन प्रॉपर्टीज़ को आपने उस फाइल को फिर आपने हेड फाइल जो HTML की फाइल है हेड टैग के अंदर उसको लिंक करना है। तो देखते हैं इसका प्रैक्टिकल वर्क। दिस इज़ माई document.html फाइल and h1 heading and paragraph. This is a paragraph. So style, the first method we learn inline methods for styling. In this method you give style attribute, style and background color. Background color we take that color and check result. Yes, color has been changed. And then we can change h1 heading, giving style attribute and font size we provide larger and check the result. Control save. Yes, h1 size has been changed. And then we can change the paragraph style attribute, giving property font family. Yes, you can font family and the font family has been changed. So this is a inline methods. And second method is embedded method or internal methods. For embedded method you remove the first inline method. You can style attribute, style tag, and within the style tag you provide properties of CSS, body, curly brackets, background color blue, paragraph property you can provide font size, font family, control save. Yes, color has been changed and paragraph font has been also changed. And if you want
H1 heading change, property font size larger, so save, and size of font of heading is changed. So this is a internal or embedded methods, and after that we learn about external style sheet. तो आपने एक्सटर्नल जो स्टाइल शीट है उसको किस तरह से आपने HTML फाइल के साथ लिंक करना है, तो उसके लिए आपने एक अलग से इस फोल्डर के अंदर फाइल को क्रिएट करना है। मैं करता हूँ style.css के नाम से। तो ये मेरी CSS की फ़ाइल जनरेट हो गई है। तो यहाँ पे फिर आगे अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको आपने प्रोवाइड करना है। इससे पहले मैं इन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो style.css पे आपने आना बॉडी, एंड देन you write property of body, background color, you can provide colors, and then you can you provide properties of H1 property. You can give font size is larger, font family, and then font weight I give 900, and then we provide property of paragraph, font family, provide style, and then font weight I give 700. So after the completing property, you can see the result: heading and the paragraph, font size, and font style has been changed. So these are the three basic methods. So friends, आज की इस वीडियो में हमने सीखा है इनलाइन, उसके बाद इंटरनल मेथड्स को एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट को आप किस तरह से HTML फाइल के साथ लिंक करते हैं। उम्मीद है आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर कर पाएंगे किस तरह से आपने HTML फाइल में अपना जो टेक्स्ट है उसको किस तरह से फॉर्मेट करना होता है। उसमें डिफरेंट जो टैग्स एंड प्रॉपर्टीज़ होगी उसको हम सीखेंगे। सो स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू सो मच।